This chapter is all about production of potential by changing the flux, magnetic flux. Okay. Okay. All right. So I will just share the screen. Okay. You can see the NCRT opened. Yes, sir. All right. So yeah, NCRT में I think it's very nicely given. So I'm going to use NCRTs to start with and do all the solved questions and then unsolved. Okay. Okay. So the first law we need to read is the law of Faraday. Okay. Okay. Or what does the law state? Let's understand that. Okay. So this is the experiment that was done, and this is a coil wire which can it's a metallic wire, so it can have current in it produced, and this is the circuit, and this is a galvanometer. So वायर एक वायर लेके उसको टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया और एंड में उसके गैल्वानोमीटर लगा दिया, राइट? Yes, sir. सो वायर हैज नो बैटरी, नथिंग, कुछ भी नहीं है. And then what they do is they bring north pole of a bar magnet towards the coil. Okay. As they bring it closer to the coil, the number of magnetic field lines that pass through the coil keeps on increasing. Okay. Okay. What they notice is if they bring the north pole close to this coil, the galvanometer shows deflection. Okay. ठीक है? Further, the deflection is found to be larger when the magnet is pushed towards or pulled away from the coil faster. So अगर ये आप तेजी से इसकी तरफ लेके आओगे और तेजी से पीछे ले जाओगे, दोनों ही केस में the deflection is seen in the galvanometer. So the magnetic field lines which are passing through the coil are either increased or decreased. अगर increase करोगे तो अभी आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगी, और अगर डिक्रीज करोगे, दूर वापस ले जाओगे, तो भी डिफ्लेक्शन नजर आती है. Hmm. Okay, what it shows is if there is a relative motion between the magnet and the coil, this magnet and the coil, आप ऐसे भी कर सकते हो कि keep the magnet stationary and move this coil left and right, this coil, तब भी आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगी because there is a relative motion between coil and the magnet. Anytime you see a relative motion, you see a deflection. Okay? Okay. So there is deflection means galvanometer तो deflection तभी दिखाता है जब current होता है. If there is a current, you will see the deflection. Okay. Okay. So this process of being able to produce current in closed circuits by the use of relative motion between a magnet and the coil is known as the process of electromagnetic induction. You are converting the magnetic energy, the flux, into electrical energy. Okay. आप यूज तो मैग्नेट ही कर रहे हो, बिजली तो कहीं है नहीं, तो बिजली पैदा हो रही है, लेकिन यहाँ पे करंट इज गेटिंग इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट. Understood. Now what you do is reverse it. Now, if the south pole of the bar magnet is moved towards or away from the coil, the deflection in the galvanometer are opposite to that observed with when north pole was being brought. So if you invert this magnet, a bar magnet, if you invert it, इसको उल्टा कर दो बार मैग्नेट को, और फिर से वही एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, you will still see induction, but the only difference will be now the direction of the current will reverse. The galvanometer will show deflection. If it was showing deflection in this direction, it will show deflection in this direction, which means a reversal of the current direction, which is a induced current. Hmm. Right? So
this whole experiment was being done, and assume now let's say the same experiment. Any questions in this? What exactly is happening? The number of feed lines, one, two, three, four, five, which cut through the coil, keeps on changing. If you bring it too close, more feed lines are able to pass. If you move it away, the number of feed lines which are able to cut through become less. ये क्योंकि ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा कॉइल से, ये वाला Hmm. और ये वाला में भी, राइट? नीचे वाले ये बिल्कुल बाहर निकल जाएगा अगर दूर ले जाओगे तो, कुछ ही Yes, अंदर sir. जाएंगे. तो पहले इफ यू ब्रिंग इट टू क्लोज, there are 5 feed lines which are passing. If you bring it too far, maybe just one passes. So this change in number of feed lines, or this magnetic flux, okay, flux is represented by phi of the magnetic this particular magnet, bar magnet, keeps on changing. If you bring a delta in phi in some time t and divide these two, okay, this term is what is producing the rate of change of flux in the coil. The rate of change of flux in the coil, when I say change of flux, I mean the number of feed lines, is producing the required current. Understood. Going aram ram se कोई जल्दी नहीं है, तो anytime you feel stuck or don't understand. So basically, if you notice, whatever work you are doing, बार मैग्नेट को हिलाने में you do manual work, right? बार मैग्नेट को Hmm. हिलाएगा कौन? So that work is finally appearing in the form of electrical energy in the coil. Okay. बार मैग्नेट को हिलाने के लिए कौन? Who's moving the bar magnet? Somebody has to move it, right? So you Yes, have sir. to do mechanical work. Class 11th wala, right? So, and that gets converted into electrical energy, and through the medium of this machine, the machine which is made up of the magnet and a coil, your manual work in joules is getting converted into energy in joules. Understood. Okay. Let's say, let's move forward on this. Clear? Okay. Yeah, that annotation sign has मेरे को तो आ रहा है. आ रहा है? हाँ. आ गया, ठीक है. Got it. Okay, let's do the same experiment now, but let's do one change. And that change is okay, this is the change you are bringing in. Instead of a bar magnet, use this. Another Okay. coil. Okay, and this coil has a battery connected to it. Okay. Okay. So what happens is the magnet is getting replaced by the second coil, but the second coil has a battery. Now the steady current in the coil produces a steady magnetic field. We have already studied a current carrying conductor, a circular loop will produce magnetic field. तो इसने जो ये magnetic field दिखा रखा है इसके अंदर, that magnetic field you can see is this. ये magnetic field इसने बनाया हुआ है. Hmm. Okay. This is the magnetic field due to the circular loop C2. C2 has produced a magnetic field which is going through the loop itself. Okay.
सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी हमें पता है. वी हैव स्टडीड दिस B, डेरिवेशन ऑफ B ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ड्यू टू infinite length, finite length and stuff like that. Biot-Savart law and all, everything we have studied. Okay. Now, तो इसमें करंट बैटरी है तो थोड़ी देर में करंट यहाँ पे आ जाता है और एक स्टडी मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है. What you will notice is थोड़ी देर के बाद, मतलब after some time, this galvanometer, okay, then this coil, after it has a current and a magnetic field generated, we bring this coil close to this coil. And now we have magnetic field passing, magnetic field of C2 passing through the coil C1. What we notice, there is no deflection. For the simple reason, क्योंकि आपने अभी relative motion start नहीं करा है. आपने एक fixed magnetic flux उसके through pass कर दिया. Yes, So the fixed magnetic flux is passing, and therefore there is no d phi by dt available to you. What you want is d phi by dt, which means there should be a rate of change of flux through the coil 2. But it is not happening because आपने बस इसे रख दिया यहाँ पे. Okay. Now what you do is, लेकिन शुरू में when you bring the coil is moved towards C1, sorry, this is coil 2, I'm sorry. So coil 2 जब इसके पास धीरे धीरे लेके आओगे, it will show deflection. Okay. And when coil 2 is moved away, it will show deflection in the opposite direction. But in this case also, what you notice is the induced EMF or the current. EMF, when I say EMF, I mean electromotive force, same as potential, same as battery's EMF. So this particular loop has a current in it, and the current is only possible if you have a battery in it. But battery नहीं है यहाँ पे, but current फिर भी आ रहा है. इसका मतलब there was some potential generated in coil number 1, and that potential resulted in and coil number 1 has a resistance also. Current पैदा हुआ है because of relative motion with C2. Current तो पैदा हो गया, तो वो आ कहाँ से रहा है फिर current? You know, what they say is what you induced in C1 is actually the EMF, and the result of generating EMF in C1 is visible to you by way of the current which you see in the galvanometer. Current the symptom है. Current is the symptom that something is happening. And what is that something? Generation of EMF. Which means you have created a battery inside C1. C1 में बिना किसी बैटरी लगे हुए करंट कैसे दौड़ रहा है? इसका मतलब for current to flow in any metal, in any resistance, you need V is equal to IR. You are able to see I through galvanometer deflection. The coil has a resistance. That means the coil has a potential difference also existing somewhere. That potential difference is being known as the EMF, electromotive force, which you have generated by doing work. And that work is the movement of the coil 2 having a relative motion with C1. So manual work is being done, and that manual work is showing up as deflection in galvanometer. But in fact, what you have generated in C1 is V is equal to IR. I is the current in the galvanometer. R is the resistance of C1. Any doubts in your mind that come up? अब एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई कि करंट तो आ रहा था, लेकिन करंट तो एक सिम्टम है. एक्चुअल करंट तो तभी पैदा होता है जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है. Yes, sir. इसका मतलब C1 में कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी है. There is an electromotive force for sure. Okay, sir. All right. So the word relative motion is very important because it is the relative motion that produces this d phi by dt. If you move these two coils
with the same velocity. अगर ये आप आगे लेके जा रहे हो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल 1 के पास 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसको भी 5 मीटर पर सेकेंड से हिला रहे हो, सो बोथ आर मूविंग लेफ्टवर्ड with a velocity of 5 meter per second, they have no relative motion because the number of field lines will not change. Yes, sir. But if this is moving with 2 meter per second, this is moving with 3 meter per second, you are having a relative motion, and therefore you will see the fluctuation in this. So the word relative motion is the most important word for you at the moment, Okay. because it results in a change of number of field lines that pass through the other coil. ठीक है. Yeah. Let's do this experiment one more time and see what happens. Okay, so the experiment goes like this, that now that relative motion is not an absolute requirement. You can still hold them together. ठीक है? But what you do is, in the second case, in the third case, which is this, ये जो की नजर आ रही है यहाँ पे, ये वाली टैपिंग की. Yes, sir. So what you do is you ऑन ऑफ करते रहो इसको. इसका मतलब कभी तो C2 में करंट सर्किट पूरा हो जाएगा इसमें. You will see some current getting produced, and hence a magnetic field, and that magnetic field will go like this and this. हाँ. और फिर इसको ओपन कर दो, करंट को बंद कर दो, Okay. खोल दो, तो this magnetic field will vanish. So what are you doing? You have been able to successfully produce the d phi by dt. Vanish कर दिया, phi पहले आया, phi को हटा दिया, तो d phi by dt मिल गया. Yes, sir. Right? So relative motion definitely is a requirement, but this is a third way you can produce the deflection, or you can induce what I said popularly is known as EMF in the coil number 1. So तीनों cases में we were able to generate EMF in coil number 1 by first bringing a bar magnet close to this. In the second case, by bringing another coil with battery close to this. Both these involved relative motion. And then third, no relative motion, but on off of this battery. The conclusion is, किसी भी तरह से d phi by dt पैदा कर लो, by any method, you are going to see deflection in this galvanometer, which means you will see that there is a EMF which gets generated in the C1. You can start rotating it also, by the way. अगर इसमें करंट है और फिक्स कर दो उसको, यहाँ पे इस की को बंद कर दो, और what you do is you have a method by which this coil can rotate now. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका फील्ड पैदा होगा, वो जब इसके थ्रू पास होगा वो अलग अलग होता रहेगा, क्योंकि कॉइल मूव कर रही है. अगेन दिस यू विल सी डिफ्लेक्शन. सो रोटेशन कैन बी अनदर वे टू प्रोड्यूस EMF. उसमें भी रिलेटिव मोशन हो गया ना, हाँ. एक टाइप का. ऑब्वियसली लीनियर नहीं है, एक रोटेशनल है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको कट करती हुई जा रही हैं वो चेंज होती रहेंगी. द मोर यू डू द बेटर इट इज to see the deflection. The more d phi by dt, higher is the EMF. And remember, every turn will have EMF. So more the number of turns you bring here, more is the EMF. Because every turn is experiencing the same d phi by dt. So all the d phi by dt's get added. But your field lines are going like this.
So every turn, and for example, you're doing tapping of the key. ऐसे टिक टिक बार बार खोल रहे हो बंद कर रहे हो तो द मैग्नेटिक फील्ड इज वैनिशिंग एंड कमिंग एंड इट इज लिंक टू ईच ऑफ दिस कॉइल 2 3 4 चारों के अंदर डी फाइव बाई डी टी हो रहा है तो वो चारों ईएमएफ ऐड हो जाएंगे मतलब वट एवर डी फाइव बाई डी टी इज इन वन कॉइल इफ यू मल्टीप्लाई इट विद एन you will get the EMF of the all the n turns. Understood. Okay. Very interestingly, the only I think good part which I noticed was that in the first experiment, if you reverse the direction from instead of using a north side of the bar magnet towards the coil, you use a south side of the bar magnet and you repeat the experiment, you still see the deflection, but the deflections are in opposite direction. That's all. That is the only difference that happens. Okay. अगर आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल यूज करते हो उसी तरह से अगर आप इस केस के अंदर बैटरी को आप उल्टा लगा दोगे इफ यू कनेक्ट द बैटरी इन अ रिवर्स मैनर विच मीन्स ये नेगेटिव है ना इसको पॉजिटिव कर देते हैं इसको नेगेटिव कर देते हैं तो बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं अब इसको आगे पीछे लेके जाते हैं what you will notice the direction of the current which comes reverses. तो source जो है the source तो यही है हाँ. यही कुछ कर रहा है जो यहाँ पे अपना फ्लक्स सप्लाई कर रहा है इसको लेकिन इस तरह से सप्लाई कर रहा है कि वो फ्लक्स के अंदर किसी भी तरह से डी फाइव बाई डी टी आ जाए सप्लाई मेथड इज दैट Yes, sir. Now that supply is actually, if you notice, this supply is basically nothing but the supply of magnetic field. So the magnetic field or the magnetic flux is getting supplied to this in a way which is d phi by dt and is resulting in generation of electromotive force. But if you supply this magnetic field in a reverse order, which means अभी तो electric field lines ऐसे हैं बाहर की तरफ. But imagine a situation where I don't supply this. I say I'm going to bring a north-south pole close to you, which means the magnetic field lines now look like this. Reverse direction. साउथ पोल में अंदर आती है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से दूर जाती है इफ यू नोटिस अ बार मैग्नेट a north pole say they come out in a south pole they come in Okay. ये साउथ पोल बन गया अभी देखो करंट की डायरेक्शन बदलने से तो अभी भी रिलेटिव मोशन होगा यू विल स्टिल सी द डिफ्लेक्शन बट यू विल सी दैट द डिफ्लेक्शन इज इन द रिवर्स डायरेक्शन जब ये नॉर्थ पोल बन के काम कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी थी तब डिफ्लेक्शन मान लो ऐसी हुई लेकिन अब इसको उल्टा बैटरी से साउथ पोल बना दिया ऐसे वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द डिफ्लेक्शन विल बी ऑन द अदर साइड समझ गया एंड माइंड यू दिस if you bring this and you can have both the conditions also you can have the tapping of the key and you can also have a relative motion तो और EMF मिल जाएगा because more variation in d phi by dt will be there हिला भी रहे हो और डी फाइव बाई डी टी जो है की से भी कर रहे हो दोनों को कंबाइन कर लो यू कैन हैव टू वेज वर्किंग साइमल्टेनियसली टू प्रोड्यूस ईएमएफ ऑब्वियसली यू विल गेट मोर ईएमएफ बिकॉज नाउ यू आर यूजिंग मैनुअल वर्क टू प्रोड्यूस रिलेटिव मोशन एंड यू आर यूजिंग बैटरी ऑल्सो टू सॉरी बैटरी तो रहेगी हमेशा ही बट यू आर ऑल्सो डूइंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द बैटरी on and off is also producing an EMF in this coil and the motional part which is a relative motion between the two is also producing a EMF. So two EMFs are getting generated in C1 because of this combined technique of on off of this key and the motion of the relative motion between the two magnetic coils. Okay. Yeah.
Okay, let's discuss few things on the magnetic flux. Very important concept because although what time I've been talking about these arrows, right? Flux, the flux passing through the coil number C1 and the source is C2. Okay, let's talk about this flux. So, what is magnetic flux? Okay, so if you notice if you have this area, okay, which is shown to be I think it's some area A, maybe a coil. There is a magnetic field which is passing through it. Draw a perpendicular on the area. And then notice what is the angle between the magnetic field passing through the coil, or the region has a magnetic field already. Notice the angle between the magnetic field and the area. Hmm. Okay, so this scalar product B dot A, like in Gauss theorem, it was E dot A. It was Yes, sir. electric flux there. It is magnetic. So this term B dot A gives you the magnetic field, where theta is the angle between the B and the area vector. Area vector is drawn perpendicular on the area. So this is your area, any area which you are given. For example, area अगर आपने ऐसे बना दिया एक, then it हाँ. is perpendicular like this. Perpendicular to the area is the area vector. मान लो magnetic field is passing like this, right? So this angle is what we are concerned with. The angle between the area vector and the magnetic field. ठीक है? Yes, sir. Alright. सिंपल है बिल्कुल E डॉट A से मतलब मैच करता है. Let's say this is the scenario. Very interesting and quite complicated. So if you notice this area, ये वाला, इसके अंदर you see the area is not like a normal rectangular loop, but this area itself is very curvilinear. Hmm. तो इसमें नॉर्मल हर जगह पे अलग ही बन रही है कुछ, हाँ. है ना? तो बी तो सेम ही है, खैर बी सेम एवरीवेयर, बट द डॉट डी ए इज डिफरेंट बिकॉज ये वाला एरिया अगर लेते हो तो डी ए की डायरेक्शन देखो क्या आ रही है. इफ यू टेक दिस एरिया, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, सो एरिया यहाँ तो बहुत अच्छा एरिया है, इट्स अ वेरी इजी एरिया टू डील विद, बट Hmm. लुक एट दिस कॉम्प्लिकेटेड एरिया. इसमें the area is not making standard angle with the A, sorry with the B. यहाँ पे तो B और A के बीच में एक स्टैंडर्ड एंगल है हर जगह पे, क्योंकि एरिया इज फ्लैट यहाँ पे. बट लुक एट दिस एरिया, दिस इज नॉट अ फ्लैट एरिया, इट्स अ कर्व्ड एरिया लाइक दिस. So it has to be divided into multiple small areas, and then you have to decide on each area. And this is my curved area. I will take this area, इस पे परपेंडिकुलर यूं बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड मान लो यूं जा रहा है. बट इफ यू टेक दिस एरिया, इसमें हो सकता है डायरेक्शन यूं हो, तो द एंगल बिटवीन बी एंड ए में चेंज. सो दिस इज अ सिचुएशन विद different directions of the area vector. The angle it makes with B is different. Okay, so you sum all of them, B dot dA, for the whole surface, divide this surface into multiple parts and calculate. The SI unit of magnetic flux is Weber, Hmm. and the magnetic flux is a scalar quantity. As you can see, it's a scalar product.
B dot A. ठीक है? ठीक है. It's a scalar product. You don't have to worry about this. Just for awareness है ये कि here it is not a flat area. Here it is a flat area. अब ये circle is a flat area. Area vector is standard. Okay. But ये this is not a flat area. It's a curved area. So you can't really say कि इसमें कौन सा एंगल बन रहा है. It may be different at different places. नीचे वाला जो एरिया यहाँ पे है, it may be going like this. And magnetic field के साथ एंगल अलग हो गया इधर. Right? Okay. So we are dealing with, this is, the unit is Weber. Okay. Also known as Tesla meter square. So this is Tesla and area is meter square. So 1 Weber is when 1 Tesla magnetic field is passing through 1 meter square area. The amount of magnetic flux passing through 1 meter square and the magnetic field given is 1 Tesla. When 1 Tesla of magnetic field passes through 1 meter square, we say the flux contained in the loop or the area is of 1 Tesla. Sorry, 1 Weber. Okay. The magnetic field lines. Flux, as if water is flowing through something. Here the magnetic field lines are flowing through the area. The flowing magnetic field lines are called as flux. In Gauss theorem, the flowing electric field lines are called as flux. Okay. Okay. I'm going slow so that you can easily absorb what is happening. Yes, sir. Aram se koi. Because there are only 2 laws we need to learn. One is a Faraday's law of electromagnetic induction, which we have seen experimentally what is happening. The other law we need to understand is the Lenz's law, and this chapter is over because there are only 2 laws in this, and then we have to apply those 2 laws. But we also must know what are the physical quantities like flux, magnetic field, which give mathematical forms of Lenz's law and Faraday's law. Okay. Maths तो चाहिए ना उनकी क्या है? Because those laws only deal with magnetic field, flux, area and stuff like that. That is what they deal with. All right, let's move forward on the Faraday's law of electromagnetic induction. अभी तक हम क्या कर रहे थे? We were just focusing our attention on the what is that Faraday was trying to show is that there is a generation of some potential in coils if the coils undergo a d phi by dt. If coils and circuits are exposed to d phi by dt, they will have an EMF produced in them. So some external source comes and does that. Like a magnet, like a coil having battery and tapping, like bar magnet having relative motion with another coil. There are various mechanisms to produce that EMF or deflection in the galvanometer. Okay. Now, what is the conclusion? I've already told you the conclusion, but let's repeat ourselves. What exactly is the conclusion? From the experimental observation, Faraday arrived at a conclusion that the EMF is induced in the coil. Finally, वो बोलता है जो करंट नजर आ रहा है कॉइल 1 में वो डिफ्लेक्शन नजर आ रही है, दिख तो करंट रहा है लेकिन प्रोड्यूस क्या हुआ है? EMF. EMF मतलब वोल्टेज, वोल्ट्स में. Yes, sir. ठीक है. So the motion of the magnet towards or away from the coil 1 in experiment 6.1 and C2 towards or away change the magnetic flux associated with the coil 1. यही हो रहा था. हाँ. बढ़ रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, घट रहा था, दूर ले जाने पे घट रहा है, पास ले जाने पे बढ़ रहा है. The change in magnetic flux
induces EMF in coil C1. I told you ना d phi by dt चाहिए. Yes, sir. पहले तो d phi चाहिए. अगर d Hmm. phi नहीं होगा तो वैसे dt से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है. Okay. It was this induced EMF which caused the electric current to flow in coil 1 and through the galvanometer. तो वो जो EMF पैदा होता है जो फैराडे ने कंक्लूड करा वही करंट प्रोड्यूस करता है और वही गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन नजर आती है. Okay. A plausible explanation of observation is as follows. When the tapping की एक एक्सपेरिमेंट हमने टैपिंग वाला भी करा था जहां पे हम करंट को ऑन ऑफ कर रहे थे. Hmm. तो उसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन आई? द resulting magnetic field rises from 0 to a maximum value Huh. and then again you open the key, तो that maximum value of the magnetic field reduces to 0 क्योंकि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है जो करंट से पैदा मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है करंट ही खत्म कर दिया की खोल के. Hmm. तो वहां पे की टैपिंग से आप करंट को ऑन करते हो. जैसे ही करंट फ्लो करता है कॉइल 2 में मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. दैट मैग्नेटिक फील्ड इज पास्ड ऑन टू कॉइल 1. Coil 1 is very happy. It had no magnetic field. Suddenly it has so much magnetic field coming from the neighboring coil where the tapping is happening. And you again tapped it, open kar diya. So from a situation of so much magnetic field, the coil 1 now has no magnetic field. क्योंकि वो जो दूसरी coil है उसने circuit खोल दिया. Right? So you are creating d phi by dt in the coil 1 using coil 2 with the help of tapping mechanism. And what you're doing is you are increasing the magnetic field flux from 0 to maximum and again back to maximum to 0 by opening the key. ये बार बार करते रहोगे. बार बार आपको coil 1 के अंदर you will see the magnetic deflection of the galvanometer, which means a constant production of EMF and then EMF vanishing, coming, vanishing. ये होता रहेगा. ठीक है. देखो करंट ड्रॉप्स टू 0. जैसे ही सारा मैग्नेटिक फील्ड चला जाता है वापस 0. The common point in all these observations is that the rate of change of magnetic flux through the circuit induces EMF. मैंने बोला था ना फाइनली इट इज ऑल अबाउट d phi by dt. DT. अगर अब coil, if you have a coil and you have some mechanism to produce this d phi by dt, you will be able to generate an EMF in the coil and you will see therefore a current flowing in the coil. Okay. The only thing is you need this strategy d phi by dt. DT. This law is what is called as the Faraday's law of electromagnetic induction. The fact that you can produce और जनरेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो जो जनरेटर्स होते हैं हमारे जो बिजली हमारे घर में आती है सारी की सारी is based on this. I'm not talking about nuclear energy, but I'm talking about those dams and all that जहाँ पे पानी गिरता है ऊपर से. पोटेंशियल एनर्जी होती है पानी में mgh. वो पानी नीचे गिरता है और पानी जब नीचे गिरता है तो उसको रोटेट करता है वो मैग्नेट को. कॉइल को रोटेट करता है और कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होती है. तो कॉइल के थ्रू जो है लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है और कॉइल्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाती है EMF एंड दैट EMF is what gets supplied to our houses. Okay. So Faraday's law of induction is not a ordinary law just for this one coil. The whole electricity which is being produced is based on Faraday's law of induction. न्यूक्लियर एनर्जी और मैं कोयले से जलने वाली एनर्जी की बात नहीं कर रहा. मैं बात कर रहा हूँ when you have coils and magnets being used in the dams for production of electricity. Where the magnets are not small magnets, they're huge magnets and the coils are huge. But how do you rotate or produce d phi by dt is by throwing water on the coil. Okay. Because you need to move the coil, right? You need relative motion. Hmm. And it is produced using rotation. Coil होती है अंदर और ऊपर से पानी गिरता है and you get it. Understood.
This is uh, the law. Let me show you the law so that you can. They can ask you define the lenses. Sorry, define the Faraday's law of magnetic इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लॉ इस चैप्टर का यही है. देखो क्या लिखा हुआ है. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. The negative sign you see is very crucial. This negative sign indicates the direction of E and hence the direction of the current. We will discuss this sign later. It has a significance, but currently our focus is only on derivative of phi with respect to t. So let me give you an example. If you have an example where flux is varying like this, it's a time varying flux, okay? So let's say it is t square, 2t square. And somebody says, please tell me the the EMF which is getting induced in a coil which is subjected to. अब देखो टाइम वेरिंग भी कर सकते हो आप. फ्लक्स टाइम से वेरी होता है पैराबोलिकली. ये कॉइल है, इसके थ्रू एक फ्लक्स जा रहा है लेकिन टाइम से बदल रहा है. अच्छा. तो आपने बोला कोई बात नहीं, आई विल कैलकुलेट डी फाइव बाई डी टी. ठीक है. 40 हाँ. टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड. 4 into 1, 4 volts. निकाल लिया. Somebody said, okay, very good, आपने ये कर लिया, बट मेरा फ्लक्स तो अलग तरीके से वेरी करता है. मतलब देख बता दो कैसे वेरी करता है. टाइम से, टाइम वेरिंग की बात कर रहा हूँ. सिंपल टू अंडरस्टैंड. सो माई फ्लक्स इज 2 sin omega t. My omega is pi. तो टेल मी एट t is equal to 1 by pi, what is the EMF which is getting generated? You said no problem. d phi by dt is equal to 2 omega cos omega t. डेरिवेटिव ले लिया. हाँ. तो लिख दिया 2 into 1 by 2 into omega is pi. Yes sir. Cos of pi into 1 by pi, 2 pi cos 1. काफी cos 0 के पास ही है, तो probably it can be say ये 1 ही हो गया ऑलमोस्ट. आंसर आ गया. सो दीज मेनी वोल्ट्स, 2 pi volts is my answer. ठीक है. Right? So you can take derivative if you're given an equation. कुछ क्वेश्चन फिगर वाले आएंगे जहां पे आपको ये एक एरिया वेक्टर दिया होगा. You will have an area and they will say that the magnetic field is passing through the area vector like this, but the perpendicular to the area vector is making 60 degree with the magnetic field. So you will say, okay, no problem. Flux is given by B dot A. It's a dot product, which is B A cos of angle between them. तो उसे cos 60 डाल देंगे. B की वैल्यू टेस्ला में दी होगी. एम्पियर A will be given in meter square. So you will say these many Webers of flux is flowing through this coil, closed loop. ठीक है. So पहले तो हमें फ्लक्स भी निकालने आना चाहिए. सेकेंड स्टेप के अंदर हमें पता होना चाहिए फ्लक्स को बदलना कैसे है. अब अगर इसी कॉइल को मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं और रोटेट करने लग जाऊं, तो एरिया वेक्टर विल स्टार्ट मेकिंग डिफरेंट एंगल विद बी. बी तो फिक्स्ड है. हाँ. बी तो मैंने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड. अब मैं कॉइल को रोटेट करने लग गया उसके अंदर. सो दिस इज माई कॉइल. ये मैंने फिक्स कर दिया इस एक्सिस पे, और मैं इसे ऐसे रोटेट कर सकता हूं, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रहा है. इस समय इफ यू नोटिस द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर. नो, सो फ्लक्स इज 0. एरिया वेक्टर, सॉरी, फ्लक्स इज मैक्सिमम. cos 0 आ गया ना, एंगल पैरेलल है. द एरिया वेक्टर एंड बी इज पैरेलल. when this particular loop, if it comes in this direction, अगर ऐसे आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा,
The area vector will be like this, Yes, sir. and it is making 90 degree with the magnetic field, cos 90. Zero magnetic flux is passing through the loop. और दिख भी रहा, पास भी नहीं हो रहा, सिर्फ कट होके ऊपर से जा रहा हाँ. है ना? तो डिपेंड्स. So first step is how to find phi. Phi is to be found using this expression. In the second expression, you can play with multiple things. You can have a time varying magnetic field given to you. You can have an area which is rotating, and you can have theta, which is actually the real rotation. कई बार क्या होता है, आपने एक coil रखी है ऐसी, and the magnetic field is passing through it. What you do, this coil gets heated up, for example, and expands और बड़ी हो जाती है. हाँ. एरिया बढ़ गया ना. हाँ. तो आपने इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप देखो तो मान लो बी डॉट ए और एरिया वेक्टर और बी के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है. लेकिन डी फाई बाई डी टी तो नहीं था, सिर्फ फाई था. हाँ. तो आपने एरिया डबल कर दिया, मतलब आपने फ्लक्स को डबल कर दिया. Yes, sir. फ्लक्स डबल हो गया, तो आपने क्या करा भाई, मेरा पहले फ्लक्स था फाई 1, मेरा नया फ्लक्स आ गया फाई 2 डबल. सो फाई 2 माइनस फाई 1 कितने टाइम में चेंज हुआ वो, डेल्टा टी. सो 2 फाई 1 माइनस फाई 1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू फाई 1 बाई डेल्टा टी. दिस इज योर डी फाई बाई डी टी, डेल्टा 5 बाय डेल्टा टी. सो यू अगर आपका एरिया अचानक बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है तो भी आपका फाई जो है इट चेंजेस. Okay. If you change your magnetic field which you are passing through the coil, the phi will again change because phi is dependent on B. B. ये समझ में आया पॉइंट? Yes, sir. और if you change the alignment between them, coil के एंगल को बदलते रहो. Wait, let me stop sharing and show you this. Okay, you can see, right? Yes, sir. So let's say you have this a loop. This is your loop. Let me draw a clean loop using a shape. This is a loop, rectangular loop, and the magnetic field lines are passing through it like this. Sorry. Hopefully this is clear. दिख रहा है आपको ये figure. So a neat way to. Okay, and if you have to draw a area vector on this loop, so let's say this is your area vector. You can see these are anti-parallel to each other, right? So let's say the flux which is available has to be calculated first. So let me say the magnetic field which is going through this is given by 2 Tesla. Okay. And the area of this loop is given by maybe 2 meters square. बहुत बड़ा loop है. So flux is equal to B dot A is equal to 2
into A into cos of 180 Yes, sir. is equal to 2 into 2 into minus 1 is equal to minus 4 Webers. Now suddenly what happens is there is a way, artificial way, hypothetical way, that you are able to squeeze this and reduce the size to this much only. ठीक है? No. So what happens now? Your new flux is given by B to same रहा, magnetic field is not changing. But Right. area, let's say, has become half. So earlier the area was 2 meters square, but now it is 1 meter square. Yes, sir. Okay, so let me do phi 2 minus phi 1. So minus 2 Webers minus 4 Webers. And all of this happened in a split of a second, 0.1 second. Hmm. So I say, okay, मेरा aim तो finally d phi by dt निकालने का. So I'm getting minus 2 plus 4 divided by 0.1 is equal to 2 upon 0.1 is equal to 20 volts. So I have been able to calculate d phi by dt, but my focus is how the flux changed. The flux changed because I was controlling area. In the expression of flux, I changed this. Area छोटा कर दिया मैंने, तो कम Yes, sir. फ्लक्स पास होने लग गया. पहले 4 वेबर्स था, अब 2 वेबर्स है. And divided by, so d phi by dt as per Faraday can produce EMF. Okay, so Weber per second, the Weber per second gives you the voltage. So I've calculated d phi. I know delta t. ये कितने टाइम में d phi हुआ है? 0.1 सेकेंड में. मैंने कैलकुलेट कर लिया ये. This is my first flux which was passing when the area was 2 meters square. So area 1 and area 2. So अंडरस्टैंड, समझ आ गया क्या करा है? हाँ. You know? So ये करा है मैंने basically. I have done d phi is equal to b a cos phi. So what I've done is d phi by dt. B remains unchanged. The angle between them remains unchanged. I will write theta here, otherwise you will get confused. And this is dA by dt. मैंने rate of change of area ही तो निकाला है. हाँ. But I can control phi through other methods also in some cases. So he says, okay, what is the second way you will do this? I said, okay, no problem. By phi is equal to BA cos theta, and let's say d phi by dt. You're given a time variable magnetic field. So the magnetic field passing keeps on changing with time. Okay, so somebody said, okay, how? So B is equal to 2t. At t is equal to 0, magnetic field is 0. At t is Hmm. equal to 1, magnetic field is equal to 2 Tesla. At t is equal to 2.1, it keeps on changing. So what I will do, say, okay, no problem. So you are going to control, change the magnetic field. So flux is equal to 2t into A into cos theta. ये multiple के sign है. Hmm. These are getting multiplied, not vector product, okay? So d phi by dt is equal to 2 into A into cos theta. एरिया दिया हुआ है, एंगल दे रखा है, बी और ए के बीच में, यू विल गेट volts. EMF got induced because you had a way to produce d phi by dt. Okay. Third, flux is equal to BA cos theta. Now, your coil is lying like this. This is your magnetic field line.
Uniform magnetic field lines, equidistant. Yes, sir. Fix this axis. इसी के अराउंड इसको रोटेट कराना है. So now rotate it, which means the area vector, which is this, will keep on changing. ये एरिया वेक्टर है, ये रोटेट हो Yes, रही sir. है कॉइल, तो थीटा चेंज हो रहा है. तो यू विल से डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा, थीटा इज चेंजिंग राइट, Hmm. into d theta by dt. d theta by dt is the angular velocity of the rotation of the coil. Okay, so this becomes minus ba sine theta omega, and theta, which is the angle between them at any instant, can be calculated using omega t. So this will become minus ba, ये आया उससे सर्कुलर मोशन से, Hmm. जैसे v इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लीनियर मोशन में होता है, वैसे जो डिस्टेंस मूव होता है रोटेशनल मोशन में वो थीटा होता है, एंगल मूव होता है Correct. रोटेशन में, तो लीनियर स्पीड की जगह एंगुलर स्पीड टाइम में, तो ये बिल्कुल सेम ही है. तो बी Hmm. ए साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय थीटा ओमेगा, जो भी दे रखा है आपको, तो ओमेगा इज अ रोटेशन दे रखी है आपको, मान लो दिया हुआ है कि द कॉइल रोटेट्स विद 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड. The magnetic field is given to be 2 Tesla. The area is given to be 1 meter square. Calculate d phi by dt का expression. यहाँ पे b डाल दो, a डाल दो, omega डाल दो. So this will become minus 2 into 1 into sine of 2 pi t into omega. Omega is also known to you as 2 pi. So this is 2 pi. So this will become equal to minus 4 pi sine 2 pi t volts, क्योंकि है तो ये d phi by dt. The induced EMF is being calculated. ये सब induced EMF निकल रहे हैं, सब volts में आ रहे हैं आंसर. So जो Faraday का law है, we are only using that. But where is the lever to produce d phi by dt? Either we vary the magnetic field, or we vary the area, or we vary the angle between the B and A. All these three are resulting in production of an EMF. वो जो हमने फेराडे ने एक्सपेरिमेंट करे थे कॉइल वाले, ओके, उसमें भी वो फाई बदल रहा था, हाँ. वहाँ लीनियर मेथड से बदल रहा था. मतलब ही वॉज हैविंग वन कॉइल and then another coil, and he had a battery here, and he had a tapping mechanism for here, right? It was tapping. So this flux was passing through the, it reached a peak value, इसने की खोल दी. सो अगले हाँ. थोड़े माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ये इसके अंदर फ्लक्स जीरो हो गया, एंड इट लुक लाइक दिस, क्योंकि ये की खोल दी इसने, ये की खुली हुई है, नो फ्लक्स, Yes, sir. राइट. तो देयर आर डिफरेंट वेज, बट फाइनल गोल क्या है, ये लाना. हाँ. कैसे ले आओ, लीनियर मोशन से लाना चाहते हो दो कॉइल. ये जो हम केस पढ़ रहे हैं उसमें कॉइल ऐसे है नहीं ना, दो कॉइल. हम तो पढ़ रहे हैं सिंगल कॉइल बीइंग एक्सपोज टू वेरिएबल. अब ये भी तो एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ही, मतलब अगर टैपिंग हो रही है तो फाइव बढ़ रहा है, फाइव घट रहा है, तो फाइव मैक्स माइनस जीरो अपॉन डेल्टा टी. जिस यहाँ फ्रीक्वेंसी से आप टैपिंग कर रहे हो, है ना, दैट इज योर डेल्टा टी. मान लो ये करने में आपको लगता है 0.1 सेकेंड, तो और उतने ही सेकेंड में जब आप बंद करते हो इट रीचेज 5 मैक्स. सो योर डी फाइव बाई डी टी इज 5 मैक्स अपॉन 0.1 सेकेंड. आपने बंद करा और मैक्सिमम पे पहुंच गया, हाँ. राइट. सो योर डी फाइव बाई डी टी कैन कम आउट, और दे कैन टेल यू कि मैक्सिमम पहुंचने में लग गए 0.2 सेकेंड लग गए, राइट. सो योर फोकस इज हाउ डू आई कैलकुलेट फ्लक्स in a numerical, and then how do I manipulate this flux to get a d phi by dt. The real rule is minus d phi by dt, but we are currently not focusing on minus. Okay.
Got it? Yes, This sir. is the way we'll think about these numericals. How to think, कैसे सोचना होता है इनके बारे में is what is more important. Let's take an example. Okay, so let's say we are talking about a circular loop and so pi r square, and the magnetic field is passing through the, this is the angle, sorry, this is the diagram of magnetic field versus time. Okay, so you can see it's a time varying magnetic field through a circular coil whose area is given to be, not area, the radius is given to be 1.2 centimeters, and the resistance in the circuit with which coil is there is 8.5 ohms. Okay, and the magnetic field is varying in the way you have shown, and the magnetic field, it is also given. ये the magnetic field versus टेस्ला वर्सेस टाइम का ग्राफ है सेकेंड्स में, और ये वैल्यूज भी दे रखी हैं ग्राफ के ऊपर, क्या क्या वैल्यूज हैं. So this is at 2 second, this is at 4 second, and this is 1 Tesla. You can see in the first 2 seconds the magnetic field is increasing. Then it becomes stable, and then it again decreases from 4 to 6. Okay, so it says this magnetic field is being thrown at a circular coil, and the magnetic field is also given to be B is perpendicular to the coil. So which means it is parallel to A. कॉइल के परपेंडिकुलर, तो हम तो कॉइल के ऊपर ए बनाते हैं ना. Yes, sir. तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, बट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है. 6 सेकंड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये सिचुएशन है. फर्स्ट 2 सेकंड, फिर ये. क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप. इस लूप के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का जब एक्सपोजर होगा, इस लूप के अंदर इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड अगर लगेगा जो 6 सेकंड में ये बिहेवियर दिखाता है. क्वेश्चन इज प्लीज टेल अस द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट इन द 6 सेकंड्स. तो करंट भी एक तरह से बिहेव करेगा, एंड देन ड्रॉ द प्लॉट ऑफ द करंट वर्सेस टाइम. यू ट्राई दिस, कोशिश करके देखो, कर सकते हो. रेडियस इज नोन, तो एरिया इज नोन, आर इज नोन, एंगल इज फिक्स्ड, थीटा इज इक्वल टू 0 degree. The magnetic field direction you are not going to change, area you are not going to change, but you are varying the B. B से आप dB by dt करके आप you are producing the EMF. So you have to tell the behavior of current in the first 2 seconds, then from 2 to 4, and then from 4 to 6. सोच के करो. ऊपर देख सकते हो मैंने कैसे 3 सिनेरियो लिए थे. एक सिनेरियो में मैंने एक्चुअली, इफ यू रिमेंबर, आई टुक दिस टाइम वेरिंग था 2t, मतलब b वर्सेस t का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, 2t पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, t इज इक्वल टू 0. हो सकता है ये सिर्फ 2 सेकंड के लिए बिहेवियर हो, 0 to 2 सेकंड. तो ये b वर्सेस t का ग्राफ ही था. ये इन्होंने इक्वेशन की जगह ग्राफ दे दिया. कैन यू यूज दिस ग्राफ टू क्रिएट the value of B in terms of time, and then use that value of B in the expression of d phi by dt. And we know that flux is always given by B A cos theta. थीटा नहीं बदलना, 0 डिग्री है. एरिया नहीं बदलना, जो बदलना है 2-2 सेकेंड में वो ये बदलना है. इसकी अगर इक्वेशन आती है B की इस ग्राफ को देख के, तो डेरिवेटिव भी दोनों तरफ का निकालना आसान है. फाइनली तो यही करना है. A cos theta is fixed, तो बदल नहीं सकते. You need to find dV by dt finally to calculate the EMF. Try it out. सोच के करो.
what is the goal? You will find I induced throughout this happening of increasing the magnetic field, then fixing the magnetic field, and again decreasing it. So you will draw a graph of I versus T in 6 seconds. 0 to 6 सेकेंड में आपको बनाना है. How does it behave? It's a circular loop, so area is pi r square. Okay. सिर्फ B वर्सेस T का रिलेशनशिप अगर स्ट्रेट लाइन का बनाने आ गया, ये वाला और ये वाला और ये वाला, 3 इक्वेशन बना लिए. 0 to 2 ये, 2 to 4 ये, 4 to 6 इक्वेशन ये, फिर सबका डेरिवेटिव लिया, इंडिविजुअल वोल्टेज निकाल ली, रेजिस्टेंस भी मालूम है, करंट निकाल लिया.
इक्वेशन बना लो बी और टी की. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट, एट अ स्लोप. हाउ डू यू फाइंड स्लोप? कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेट्स आर 0 0. इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 1. इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 4, 1. इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 6, 0. अगर इस लाइन की मुझे स्लोप निकालनी है, इस लाइन की, हाउ विल आई फाइंड? y2 माइनस y1 मतलब 1 - 0 अपॉन 2 - 0. और इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? y माइनस एनी पॉइंट अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू दिस. ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, राइट. सो b माइनस एनी पॉइंट ले ले, ओरिजिन ले लेता हूं मैं. t माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2. सो b 2b इज इक्वल टू t एंड b इज इक्वल टू t/2. इसकी इक्वेशन आ गई b इज इक्वल टू t/2. Let me just show you. If you are given a situation like this, where you have to yourself, so let's say this is your coordinate system, okay, and you are given a straight line on this coordinate system. Okay. So this is your line. And what I say is, this line represents B versus T, for example. Okay, and let me write B, sorry, ये B है और ये T है. And what I tell you on this line, a few things about this line is that so one point on the line is this, which is time is 2 second. यहाँ पे 2 second है. And one more point I tell you, इसके ऊपर maybe I can tell you this point. कोई भी 2 point पता होने चाहिए. So let's say this is 2 4 6 second है ये. And my magnetic field here is given to be, let's say ये magnetic field जो यहाँ पे है, जो टेस्ला के अंदर होगा, obviously that magnetic field is say 5 Tesla. Now the question is, I have to create a equation between B versus T. तो मुझे BT ग्राफ दिया हुआ है, तो मुझे B versus T की इक्वेशन बनानी है. What I do is, whenever you have to create a equation of a line, you have to take 2 points on the line and you label them as x1 y1 and the other point as x2 y2. So मैं 2 पॉइंट देखता हूँ. इसका क्या कोऑर्डिनेट है? इसका कोऑर्डिनेट है 6, 5. x एक्सिस में 6, y एक्सिस में 5. तो एक कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया 6, 5. दूसरा कोऑर्डिनेट जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है ये वाला. इसको मैं लिख सकता हूँ 2, 0. Yes, sir. So I write it as 2, 0. So now I know 2 points, point A and point B, or whatever you want to call them. Okay, so ये मेरा point A है. If I know 2 points on a line, I can find the equation of the line using this rule. Y minus y1 or y2, one and the same thing, कोई भी point ले लो, upon x minus x1 divided by x2 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. This ratio, when you subtract the ordinates and abscisses and divide them, is the slope of the line. Okay, so let's write y minus, I'm using, इसको use कर रहा हूँ मैं, y minus 0, y1 को, upon x minus 2 is equal to y2 minus y1, मतलब 5 minus 0 अपॉन x2 माइनस, तो मतलब 6 minus 2. t है ना मेरा, तो यहाँ पे टाइम है, Yes, sir. तो नाम रखे हुए मैंने. सो y अपॉन x minus 2 is equal to 5/4. So b upon t minus 2 is equal to 5/4, and so b is equal to 5/4 t minus 2. So now I have been able to find the b versus t equation.
जो मैं यूज करूंगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस, मेरा तो जीरो ही दे रखा है इस न्यूमेरिकल में, लेकिन मैं वहां पे डालूंगा 5/4 टी माइनस टू, ये मेरा बी आ गया। एरिया मेरा फिक्स्ड है पाई आर स्क्वायर, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो मेरा फ्लक्स आ गया। आई विल डू d5/dt इज इक्वल टू 5/4। 5/4 टी का डेरिवेटिव 5/4 ही आएगा, ये कट जाएगा, जीरो होगा, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ जीरो 1। सो d5/dt इज इक्वल टू 5/4 पाई आर स्क्वायर EMF ओके। वैल्यू हो गई, राइट। तो मैंने यूज क्या करा, पहले तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन, तो बी वर्सेस टी का क्या रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल डेरिवेटिव तो मैं तभी लूंगा जब मुझे ये पता हो। लेकिन इन्होंने इनडायरेक्ट दे दिया, इन्होंने ग्राफिकल दे दिया, ग्राफिकल को कन्वर्ट कर लिया मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर। ओके। और नाउ गो बैक एंड यू इफ यू हैव टू राइट, जैसे मैं लिख रहा था ये वाला, राइट, मैंने एक कोऑर्डिनेट मार्क कर दिए। नाउ यू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, लाइन ये वाली, इसका नाम रख लो A B and BC. So now this is your AB, this is your OA, and this is your BC. OA की इक्वेशन लिख दी है मैंने, यू कैन पुट इट। ओके, सो दिस इज, ये लिख दी मैंने, 2 पॉइंट मार्क कर लिए, ओरिजिन से पास हो रहा था वो। हाँ। और जो ग्राफ के अंदर नजर आ रहा है A पॉइंट, वो है 2,1। हम्म। तो ये मेरा इक्वेशन आ गया, B/T is equal to 1/2, so B is equal to T/2. So if I have to write phi और B, okay, B लिखना है अगर मुझे, तो मैं ऐसे लिखूंगा, B is equal to T/2 when T belongs to 2 and 0. What is the value of B from 2 to 4 seconds? ग्राफ में देखें, यस सर। I think it's fixed at 1 Tesla। ये रहा, फिक्स्ड ही है, लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं। यस सर। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1 टेस्ला, सेकेंड वैल्यू। तीसरे की इक्वेशन निकालो आप, इसकी एक लिख दिया, दो लिख दिया, करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल भी लिख दिया, मेक द इक्वेशन ऑफ थर्ड। देखो बना सकते हो थर्ड की इक्वेशन। नाउ यू नो व्हाट इज टू बी डन टू क्रिएट इक्वेशन, यू नो 2 पॉइंट्स ऑन द, दिख रहा है ये पॉइंट भी दिए हुए हैं, यस सर। निकालो इसकी इक्वेशन, तीसरी भी लिख दो फिर। ठीक है। फिर एक एक का डेरिवेटिव ले लेंगे।
ये कौन सा कर रहे हो आप? यू आर डूइंग दिस न्यूमेरिकल राइट? अच्छा, इसी का फिर हम ठीक तो है। सीबीएसई का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। हम्म, ये रहे बी के कोऑर्डिनेट्स, ये ए के कोऑर्डिनेट, सी के। हो गया? ठीक है, यू नो एनी वन ऑफ द वैल्यूज, कोई भी डाल लो कोऑर्डिनेट। पुट ठीक है। 4 1 और पुट 6 0, जो भी यहाँ पसंद हो डाल लो। इन दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज बी, y is b right, and यस सर। x is t। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2b माइनस 2 माइनस टी, टी कर लो, माइन, यस, +4 राइट। सो b इज इक्वल टू, राइट इट एज b इज इक्वल टू, क्योंकि डेरिवेटिव db बाई dt निकालना है। b इज इक्वल टू 6 माइनस टी डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू, राइट। तीन इक्वेशन आ गई, हाँ। 1 2 3, तीनों का डेरिवेटिव ले लो। जो भी डेरिवेटिव आएगा उससे वोल्टेज आ जाएगी ईएमएफ,
ईएमएफ आ जाएगी तो करंट भी आ जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस दे रखा है। हम्म, तो 3 ईएमएफ निकाल लेना, 1 2 3, तीनों को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लेना, करंट आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, एंड देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस टाइम। गॉट इट? सो आई एम जस्ट रशिंग नाउ, वी विल कंप्लीट दिस इन द tomorrow's class or in the evening class. ठीक है। चलो, सी यू।